उसको साउंड क्वालिटी चेक करना है। Very good evening, everyone. Today we are in here at Fortis. We are on Facebook Live, and today we are having Dr. Prashant Pawar with us. He is senior interventional cardiologist, and he is having experience of more than 5 years in cardiology. And day to day, every day, he is doing interventional angioplasties. So today we have a very interesting topic for everyone, like, heart attack in young people. So sir, अभी रिसेंटली हमने देखा है बहुत सारे यंग लोगों में हार्ट अटैक होते हुए. So what is your opinion about this? Why this is happening so frequently in young people? See, heart attack is a increasing incidence in our country. तो हम देखें तो पहले the age group for heart attacks was different, was 4 to 50 grade. But recently हमने काफी सारे celebrities के साथ जो incident देखे हैं heart attack, where they were in between 30 to 40 years age, and those people had a heart attack. So reasons काफी है, risk factors, young heart attacks काफी different है. But अगर हम देखें तो the socio-economic effect young heart attack is completely different as compared to others. मतलब अगर learning member youngster and he gets a heart attack and if he succumbs to death, उनकी मौत हो जाती है, तो पूरे फैमिली में जो बर्डन आ जाता है वो completely different है, वो फैमिली gets devastated. Second, ये जो young hypertension, young heart attacks है, suppose after heart attack हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है, सपोज उनका वर्किंग एबिलिटी कम हो जाती है, तो उनके ऑक्यूपेशन पे इसका काफी फर्क आता है. तो जो वर्क को पहले कर पाते थे या जो स्ट्रेनस एक्टिविटीज वो कर पाते थे नहीं कर सकते. सेकंड, बहुत बार हमने देखा है जो लोग अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं their visas and their job gets cancelled, so it has a major effect on the occupation also. So इन दो reasons में young heart attacks और middle aged या old age heart attack में difference क्या है? सर एज आपने तो डे टू डे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने ही कुछ ऐसा एज पैदा होता है जिससे हार्ट अटैक्स होते हैं, या फिर यंगेस्ट किस एज पे देखा है आपने हार्ट अटैक? Youngest what we have seen is age 22 years male who had a heart attack. He was a heavy smoker. 22 years. 22 years. So अभी के लिए age has not been a limit actually. तो काफी सारे youngsters because of some or the other reason, many risk factors, smoking, cocaine, बहुत सारे reasons है जिन वजह से youngsters are getting affected. So recently we saw with a heart attack. So as you just now discussed कि pumping power कम हो जाता है पेशेंट्स का, तो pumping power एक बार अगर कम हो गया तो is it possible कि pumping power हम कर सकते हैं अगर टाइम से पेशेंट आए या एक बार जो डैमेज हो गया तो पंपिंग वापस से इम्प्रूव नहीं होगी? कि यंग पीपल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होने वाला है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ऐसा है कि पंपिंग एक बार डैमेज हो गया heart muscles, brain muscles, liver muscles और kidney muscles ये permanent cells है, तो regenerate नहीं होते. जैसे हमारी स्किन अगर डैमेज हो जाती है न्यू स्किन ग्रोज आउट, बट ये मसल्स परमानेंट रहते हैं. तो हार्ट अटैक जब आता है तो जो नसें रहती है ब्लॉक होता है, तो आगे जो फ्लो जाता है ब्लड का रुक जाता है, जिस वजह से हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कम मिल जाता है. तो फर्स्ट 3 to 6 आवर्स उसे हम गोल्डन आवर बोलते हैं, गोल्डन पीरियड. अगर उस समय में अगर पेशेंट आता है हॉस्पिटल में और हम वो आर्टरी जो ब्लॉक है वो ओपन कर पाते हैं, तो जो फर्दर डैमेज है हमसे हाइपरटोनिक मायोकार्डियम
मतलब वो जो मसल है उसे ब्लड सप्लाई कम जा रहा है बट पूरी तरीके से डेड नहीं हुआ है, रिकवर के इसमें है। तो अगर हम वो हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम उसको हम अगर प्रोटेक्ट कर पाते हैं तो जो पंपिंग कैपेसिटी डाउन हुई रहती है इनिशियल फेज में इट इम्प्रूव्स। बट उस चीज के लिए टाइम इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आई से टाइम इज मसल। तो अगर ऐसे जब हार्ट अटैक के सिम्टम हॉस्पिटल पहुंचते हैं और ईसीजी में पता चलता है और ऐसे हॉस्पिटल में आप जाते हो जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज, कोई नर्सिंग में मतलब कोई क्लिनिक में जाके जब चेस्ट में पेशेंट जाता है तो इट इंक्रीजेस द टाइम टू रीच द डोर टू बलून हम बोलते हैं। मतलब जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और कितनी देर में बलून से वो ब्लॉक होना रहता है डोर टू बलून टाइम होता है। एंड गाइडेंस में ऐसे है कि it has to be below 90 minutes but in our Fortis Hospital because of all efforts, it's a team effort, right, from the, I'll say, from the ward boy who pushes the trolley to the person who takes the consent and the last person who opens the balloon. So everyone is involved in that chain. So in Fortis, we have achieved a balloon to door in a time below 25 minutes. So that's a team effort. So जितनी जल्दी अगर हम पहुंचते हैं, अगर आर्टरी ओपन होती है, तो chances are there to improve the muscle. But it takes time. It's not that you open the artery and immediately heart का functioning normal हो जाएगा ऐसा. It takes few weeks to recover. But it may not revert back to normal. Okay. So अगर एक सिनेरियो के जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, somebody came at after 24 hours and pumping already 35 40 हो गया है, तो what is the probability कि उनमें increase हो सकता है? I mean based on your experience. 3 weeks back we had a person in our hospital जिन्हें chest pain एक दिन से था but because of some other reason family people were not at home so old age person थे वो घर भी रहे। जब नेक्स्ट दिन बहुत ही कंडीशन क्रिटिकल हो गई तो उन्होंने पिछला बुला के आए इमरजेंसी डिपार्टमेंट बट उस समय काफी जो हार्ट का पंपिंग है वो काफी वीक, नॉर्मल जो पंपिंग 60% के आसपास वो 20% के आगे एक वाल जो रहता है लेफ्ट साइड तो वो लेफ्ट वाली आर्टरी उसी वाल के फेफड़े को सप्लाई करती है। काफी देर तक वो सप्लाई ना जाने की वजह से वाल लीक और उस वजह से फेफड़े में पानी, जिसे हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर काफी कम हो फेफड़ों में पानी जम क्रिएटिनिन भी काफी बढ़ गया ऐसे वक्त लाइफ सेविंग प्रोसीजर उन्हें मेडिसिन शुरू करके हमने एंजियोग्राफी की और उसको ब्लॉक किए एंड वी ओपन द आर्टरी आल्सो बट आफ्टर delay of 24 hours, the pumping capacity doesn't improve much. This pumping capacity, even after 3 weeks, also is 20%. वाल जो काफी वीक था वो वाल वीक थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है तो डिले हो जाता है। उसके बाद इट्स लाइक कंसीडर अगर एक पेड़ है वो पूरी तरीके से मर गया है उसे हम बाद में कितना भी पानी डाले उसे कितना भी मैन्युअल डाले फर्टिलाइजर डाले इम्प्रूव ग्रो नहीं होने वाला। तरीके से हार्ट मसल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीच हॉस्पिटल इन टाइम। Sir, why young people are मतलब young people के लिए उनका कोई अगर हिस्ट्री नहीं है तो क्यों कुछ लोगों को कुछ young people को जल्दी हार्ट अटैक हो जाता है because they have not reached that certain age तो वो कैसे डिसाइड करेंगे young people की whether they should go to hospital get evaluated because बहुत ही sudden traumatic होता है तो how they will come to know कि उनको probability है कि उनको heart attack हो सकता है। So young पेशेंट्स में यंगस्टर्स में एक रहता है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री कोई मतलब एक बीमारी रहती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं 500 और फिर ट्राइग्लिसराइड्स काफी बड़े रहते हैं। अगर हम देखेंगे ब्लड कलेक्ट करने के बाद अगर वो थोड़ी देर रुकने के बाद देखेंगे तो ऊपर का जो सीरम रहता है कंप्लीटली बिकम्स मिल्की वाइट हाइपरट्राइग्लिसराइड। ऐसे पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ दिस risk factor of familial hypercholesterol are more prone for getting heart attacks. Second common cause youngsters में रहता है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से बहुत बार जो फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं उस वजह से प्लाक इरोजन होता है एंड बहुत बार इनमें कॉमन कॉज वजह थ्रोम्बोस नॉट कॉज
तो जो आर्टरी बंद होने के 2-3 कारण रहते हैं। एक रहता है क्लॉट, दूसरा रहता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से डिपॉजिट होना, थर्ड रहता है कोलेस्ट्रॉल का लेयर निकल जाने के बाद जो क्लॉट जमना, और फोर्थ रहता है कैल्शियम की ओवरडेशन। यंगस्टर्स में मोस्टली इट्स अ ट्रॉम्बोटिक बिलीव because of smoking, whatever. And even sir, lifestyle nowadays is, I mean, क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल सेडेंटरी बहुत हो गया है और what about food habits? What are the healthy foods they should and what? I mean, because अभी everyone is so much eating pizza, burger, all those. So I mean, ये सब क्या heart attack के chances बढ़ाते हैं क्या? अभी तो इतना अर्बनाइजेशन हो गया है कि people are more dependent on Swiggy's and Zomato's. इतना सारा जंक फूड चल रहा है. You check apps, mobile of every youngsters or especially the IT people, they have this Zomato and Swiggy going on. And all this is junk food, all this processed food, all this is preserved food. Either they'll have some preservative or most of the fat, the animal saturated fats. In वजह से because of this junk food, obesity is increasing. Second problem is lifestyle, as you said, sedentary lifestyle has been a problem. काम इतना ही चल रहा है, इसके आगे वॉकिंग का नाम नहीं रहता है. सो बिकॉज ऑफ विच obesity is increasing. अगर हम बहुत बार जो हेल्थ चेकअप्स के लिए पेशेंट्स आते हैं उनका कहना रहता है सर टाइम नहीं है. So everyone will get the same 24 hours, but you have to manage that 24 hours. You have to make sure you utilize your work time for some sort of exercise, walking staircase, or parking your vehicle थोड़ा दूर पार्क करके walk a little. That's how you have to inculcate some healthy habits in your lifestyle so as you use that official time for exercise also. अलग से कोई समय नहीं मिलता. Third, obesity is very increasing nowadays, especially if you see the recent data. Obesity is increasing even in the school going children. If you see almost it is a tune to almost 10 to 15% of childhood obesity. The reason is all same: junk food or sedentary lifestyle, mobile game. Continuous seeing the mobile, sitting at place and just punching. That is creating more of a trouble. And more of this media, especially Facebook, WhatsApp, televisions, web series, this have all made everyone addicted, right from the youngsters, old age, as well as the children. So they are just benching, they are just sitting on the sofas watching this and punching. This वजह से weight is increasing and this is creating more risk factors for heart attack. Fourth is stress, what you described. The stress can be both personal stress, work stress, which is increasing. But at work, there are a lot of pressures to finish the jobs, the cut-off limits, and all, because of which everyone is under stress. And you should know your limits and you should know how to relieve the stress. What I feel is stress is linked with obesity, stress is linked with hypertension, overall it leads to heart attack. And partly stress causes increased cortisol release, increased hormones release होते हैं जिससे adrenaline बोलते हैं. इस वजह से heart rates बढ़ जाते हैं, blood pressure बढ़ जाता है, sweating होता है. हम जब एग्जाम में देखते हैं कि उस वजह से cortisol और adrenaline ड्राइव की वजह से ये सब sympathetic ओवर एक्टिविटी हो जाती है. एक स्टडी रिसेंटली था जिसमें the youngsters who were appearing for exams, they had more incidence of hypertension, although because of the elevated hormone. So this stress is also linked other way with heart attack. One is how you relieve the stress. Some patients, because of stress, they start overeating. They go and just It's a vicious cycle. It's a vicious cycle. So sedentary lifestyle and eating more. So it is also some people try to relieve stress by drinking alcohol, by increasing smoking. So in total, this will again lead to this vicious cycle and which will lead to heart attack. So what are the tests which you advise for these young people they should do for know that if they are having heart disease or not? So youngsters, what I will recommend is one is we should get a physical examination. So right from your weight, then comes the body mass index. According to your height, we calculate the BMI. Whether you fall in that obesity or you are below the average weight.
Then comes the checking the blood pressure. Third one, there are few clinical signs which can give an indication of any heart disease or increased cholesterol level. जैसे xanthelasma बोलते हैं या xanthoma बोलते हैं, मतलब yellowish pigmentation होता है eyes के यहाँ पे बहुत बार bilaterally दिखता है yellowish orange. That is again a sign of increased cholesterol which can lead to heart attack. Xanthomas मतलब swellings रहते हैं, especially on palms and the back of the hands and legs. That can also give rise to elevated indicator of elevated cholesterol. Third comes checking the blood test. A normal, what basic test should be done is one is the CBC, complete blood count, which is the hemoglobin. Second comes the creatinine value, that you get. Third comes the lipid profile. You check all the different files, not only a mere cholesterol check, the lipid profile. Because sometimes it is only a triglyceride elevated. कोई families में familial hypertriglyceridemia, generations and generations are having elevated I think this triglycerides. is also make people are thinking just cholesterol, okay, so they are not getting worried. Because I think the LDL or triglyceride as you are thinking is more important sometimes than just. बहुत बार हम देखते हैं बहुत सारे हेल्थ पैकेजेस ऐसे छोटे मोटे सेंटर में बने रहते हैं जिसमें खाली कोलेस्ट्रॉल चेक कर रहे हैं. That is not the right thing. You check all the 5 parameters of. Fourth comes the fasting blood sugar and the postprandial blood sugar. इसमें बहुत बार अर्ली डायबिटीज पकड़ में आ जाता है. देखिए अर्ली डायबिटीज या हाइपरटेंशन don't have any signs or any symptoms most of the time unless until complication. You have to catch them early. Next is thyroid TSH level. So again that is linked with obesity, hypertension in case of hyperthyroid. Then comes the ECG. To know how is the baseline ECG. At least once, what I in an easy way, what I say is we should know if you are driving a vehicle or you are using a computer, you should know your hardware. You should know the structure of your heart by getting a 2D. And to see in 2D, what do you see? How is the pumping capacity of the heart? How are the heart valves? Are they functioning well or not? And then you should know the function of the way after knowing your hardware, you use the softwares or knowing your computer. You should get a stress test done. On stresses, we make the patient walk. See, if you see ECG and 2D go, that सभी दोनों टेस्ट में पेशेंट लाइन डाउन सुपाइन रहता है, कंफर्टेबल रहता है, और बार वो टेस्ट नॉर्मल आ जाता है. पेशेंट के सिम्टम्स रहते हैं ऑन एक्सर्शन. So on exertion, on walking, on TMD, what exactly happens? That we should get it checked. मेरे टाइम ऐसे होता है कि छोटे-मोटे सेंटर्स में टेस्ट रहते हैं, उसमें ECG करते हैं, पेशेंट फील दैट ही इज हेल्दी एंड ही स्टार्ट्स doing his strenuous activity. Recently, you have seen a celebrity who in Delhi went to the big gym and on a stress test on a TMD, on running on a treadmill, and he collapsed there. Unfortunately, gym was not equipped with all the facilities. और देर तक उनका चेस्ट मसाज करा. After stormy course, almost 3 weeks, expired. All this is everyone feels he is healthy. But the definition of healthy doesn't mean that doing only your blood pressure check or checking your hemoglobin and one cholesterol level and one is you're healthy. Or if you are not having a symptom, doesn't mean that you are free from disease. So, the basic test evaluate करना जरूरी. So nowadays even diabetes is very common and diabetes so capital like in India is diabetes. So is diabetes is itself an independent risk factor? Yes. Diabetes itself, the incidence rate is quite increasing over here, right? And it itself is an independent risk factor with respect of obesity, respect of hypertension. But what I feel is most of our Indian setups में जो diabetes आते हैं, type 2 diabetes, and उनके साथ खाली diabetes नहीं आता है. It comes along with a 1+1 offer free like things. It comes with a lipid elevation, it comes with a hypertension. So nowadays एक नया terminology है, there is a lipid tension. Lipid tension is a term where you have a lipid cell elevated along with your blood pressure, and out of that, almost 15-20% will have the cholesterol also. It's a triad or I'll say vicious cycle where one elevates, it is associated with others because सबकी जड़ एक ही है, masterly inactive and more of a junk process. So
It is an itself an independent. So at what age, sir, I mean, people should get evaluated? जैसा age है जिस पर evaluation करना चाहिए, because I think it's a vague word, but saying that how young people को हम अगर message देना है हमें कि इसको prevention लेना है तो कुछ ऐसा age का कट ऑफ क्राइटेरिया है जिसके उनको करना चाहिए. कुछ सालों पहले इसका आंसर बहुत ही सिंपल था, वो फिर डिकेड आज जो भी पुराने पेपर्स से ट्रायल्स है एवरी मतलब 2 to 5 decade is the age, but is it last 10 years 1 decade ऐसे है कि things have completely changed because of urbanization. So nowadays access there is no age limit. अभी हम हार्ट अटैक 18 years को भी देख रहे हैं. Even recently in Mumbai I had a young kid because of some genetic problem. He underwent a stenting. So there are no age limit as such to define it because of smoking, because of excessive alcohol, because of stress, because of physical inactivity, because of familial reasons, obesity. Everyone, I think, sir, should get evaluated Everyone. once. एक routine होना चाहिए. चाहे कोई age कुछ भी हो. I think everyone should get a basic health check preventive. So मुझे ये लगता है I consider this doing a health checkup as an SIP where they invest. So if you invest now for a simple health checkup, the benefits you cannot get immediately. और पर ऐसे होता है we get patient health checkup कर लेते हैं after 3-4,000 spending and they feel that all this is normal doctor के पैसे तो waste गए. So this is a common Indian mentality. So I consider health checkups as a SIP. You invest now so as to get the benefits after 10 to 20 years. Well, if you diagnose things better early, you start the treatment early, goods are to be taken later on. The symptoms also बहुत ही vague symptoms होते हैं. Most of हमारे Indian जो patients हमारे पास आते हैं, वो सबका कोई common really complaint रहता है कि acidity है. So is there any symptom जिसे लोगों को पता चले how they will differentiate कि this is cardiac versus non-cardiac? Yes. So doctor, you also have seen ये symptom हमें कभी भी medical college में क्या नहीं था gas. कितने सारे patients आते हैं डॉक्टर gas problem. Most of the patient they come to the emergency and they feel better after eating some soda and all and they go back also. Yes. Irrespective of so much उसको समझाने के बाद भी कोई तकलीफ है अंदर इसी चीज से. This gas या burning sensation, acidity, bloating sensation, ये बहुत weak symptoms होते हैं जिसमें मिस हो जाते हैं patient. Second रहता है कि सीने में दर्द होना. Specifically precordial region जो हम बोलते हैं सीने में दर्द और वो एक pinpoint point पे नहीं रहता. It is everywhere. तो pinpoint localize करता है finger से cardiac. Second, that pain is a severe pain, crunchy, constricting pain, and it is mostly is a exertional pain. Most of the time, he has exerted somewhere and he starts with pain. Exertion लग रहा है and उसके साथ profuse sweating रहता है. Left arm, the pain typically radiates to left arm, left forearm, and sometimes only jaw. और पर हमने देखा है patient complains only of jaw pain. He goes to dentist and some painkillers and pain person. He found some mortality report. Jaw pain is most of the time history. बहुत बार ऐसे होता है symptoms आते हैं. Most of the time, especially in the diabetic patients, where they don't get any symptoms, and especially some breathless and they come to hospital get ECG or ECG all ST elevation they जो हमारे हम कहते हैं segments रहती है. P wave, Q wave, R wave, ST wave हमारे terminology उसमें ST segment ऊपर चला जाता है. वो ST segment elevation दिख जाता है and patient is having no symptoms. Silent heart attack. बहुत बार symptoms may not be major. What are the risk factors which increases heart problems? So there must be certain list. Some are modifiable and some are not modifiable. So non-modifiable definitely we cannot. So can you just But tell it us? is non-modifiable risk factor. Non-modifiable मतलब जिसमें because of some of the other reasons, suppose familial history, father, mother had a heart issue, heart attacks, or
और there is a history of familial hypercholesterol, जेनेटिक डिसीज रहती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो इनमें हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं ताकि फर्दर डैमेज और हार्ट अटैक इंसिडेंस रेट गोज डाउन। तो we know that there is a family history, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन आती है, स्टार्टिंग कहाँ जाए वो शुरू कर सकते हैं ताकि वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में लाए। फाइनली वो कोलेस्ट्रॉल जाके कहाँ जाएगा, एक फैटी लीवर में जाएगा, तो दूसरा रहता है हार्ट में जाके डिपॉजिट हो। उसके सिम्टम्स बहुत लेट आएंगे जब ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जब रहते हैं, जब फैमिली हिस्ट्री रहती है, तो उनको बहुत जल्दी चेकअप्स और इवैल्यूएशन करना चाहिए। लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सीरियस किडनी प्रॉब्लम है, और तो पेरिफेरल आर्टरी, मतलब यहाँ पे दूसरी वैसे में हो सकता है, तो यहाँ वैसे में भी हो सकता है, स्ट्रोक के जो पेशेंट all these obesity, smoking, these are all risk So these factors. are modifiable risk factors. Smoking है, moderate to severe alcohol consumption. बहुत बार अभी तो youngsters they are more addicted to cocaine and all. इस वजह से cocaine से क्या होता है, artery लिखना सीख जाता है, जो spasms, and because of which for this heart attack. बहुत बार blood thinner injections and all देने के बाद artery normal भी होता है, they do not require stenting also, but two phase बहुत critical रहता है जब artery One more question that most of हमारे patients पूछते हैं कि एक बार heart attack हुआ and then they underwent angioplasty, open कर दिया, उन्होंने stent डाल दिया, तो are they again prone for having heart attack? वापस हो सकता है क्या? ये बहुत ही common questions हमें day to day practice में मिलता है। But I feel in cardiology, what I feel, there are only two procedures that we do. One is ablation of an arrhythmia, like one bar fast heart rate आती है, when we ablate that, it cures. Second is hole in the heart, close the hole. Close the hole, it is cured. दो प्रोसीजर छोड़ के बाकी जो भी प्रोसीजर्स कार्डियोलॉजी में है और पैलिएटिव। पैलिएटिव माने जब होता है तकलीफ, हम कुछ मीन से वो ब्लॉक ओपन करते हैं या बाईपास क्रिएट करते हैं या कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं एंड गिव अ टेम्पररी रिलीफ, पैलिएट दैट फेज ऑफ टाइम। बट देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, ब्लॉक है हार्ट के, हार्ट तो उन्हीं का रहने वाला है, जो ब्लॉक्स खुलने वाले हैं either because of by angioplasty or bypass, but the heart will remain the same. And आगे तो कैसा lifestyle आगे वो treatment है? lifestyle। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो मेडिसिन स्टॉप करके आते हैं, and then they don't do your sugar checkup also properly, और there are I think further depend करता है patient पे कि वो अपनी lifestyle कैसे मेन वही है कि they have to change themselves. इस वजह से हुआ है, अगर वो चीजें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आप बता रहे हैं, अल्कोहल है, अगर नहीं कंट्रोल कर पाए, अगर वेट कंट्रोल कर पाए, कोलेस्ट्रॉल दिस इज रेगुलर, so I think further things can be avoided. You can't prevent completely. Sir, is there any medication, medicine जो जिससे हार्ट अटैक हो सकता है? I mean थोड़ा अनलाइकली लगता है सुनने में, but yes, बहुत सारे जिम जो मतलब एंथुसियासिस्ट जो फ्रीक्वेंट जब में उनको वेट बढ़ाना रहता है, they are on anabolic steroids, या कोई कॉमन ट्रीटमेंट रहता है, अभी स्टेरॉइड्स भी काफी यूज हुए थे लास्ट कोविड एरा है, तो for some of the other reasons there are steroids, hormones, anabolic steroids, these have been shown to cause heart attacks because of increased cholesterol levels, increased pressures, the deposition of cholesterol increases, that will take one more lipids we are talking a lot, so जिन्होंने जैसे एंजियोप्लास्टी करवाई है जिन पेशेंट्स ने, तो उनको हमें सर्टेन लेवल मेंटेन करना चाहिए, so what should be the level LDL, there should be ऐसा कुछ कट ऑफ है कि जिसके ऊपर जाने से वो अलर्ट हो जाए वैसा।
एक रहता है LDL लेवल. So earlier LDL level normal value is 100. बहुत बार ऐसे आते हैं हमारे पास पेशेंट, हम शुरू करते हैं हाइड्रोस्टैटिक ताकि वो जो प्लाक है वो स्टेबलाइज होने के लिए. बहुत बार some relatives या GPs they reduce the statin dose suddenly from 40-80 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम पे ला जाते हैं. और रीजनिंग ये वो देते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है, आपके डॉक्टर का हाइड्रोस्टैटिक. So प्रॉब्लम ये है कि this statin cholesterol medicine is to prevent the or making the plaque stabilize or heart attack आके plaque stabilize. Second, ये जो medicines हैं regular लेने की जरूरत रहती है. और first मैं तो कहूँगा first 3 to 6 months वो statin का डोज कम नहीं करना चाहिए. स्पेशली अगर वो पेशेंट को टॉलरेट कर पाता है. ओल्ड एज लोग हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाते statin कोलेस्ट्रॉल. Then it's a different story. Otherwise, you have to continue hydrostatin 3 to 6 months. उसके बाद LDL level चेकअप करना चाहिए. LDL level गोल रहता है इनमें 50, 70. If you can continue below 50, 70, I don't think you have to maintain in high risk angioplasty in 50 around, and in other words below 70s. The LDL level you have to achieve. Continue statin for long term, but reduce it just because saying the LDL level. तो हमारे यंग जनरेशन को सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे? फाइनली सारे डिस्कशन के बाद एक फाइनल एक मैसेज उनको हम अपनी तरफ से क्या देना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कितनी जल्दी कर लेकर? तो एक तो है यंगस्टर्स में जैसे हमने रिस्क कहा था कि यंग जनरेशन change their lifestyle, should quit this smoking sedentary lifestyle. थोड़ा सा अगर आपका हार्ट नॉर्मल है, आपको then you should start doing exercise gradually. Don't overexert yourself. Start a moderate exercise. Stress level है वो कम करने के कुछ means ढूंढने चाहिए. Everyone has their own way of relieving stress. Some practice yoga, some meditation, some hobby. मैं तो कहता हूँ जिन चीजों से आपको रिलीफ रिलैक्स होता है. बहुत बार बड़े लोग आते हैं, they don't have any hobby. तो मैं बोलता हूँ सत्संग जाओ. Somewhere you have to find a way to relieve your tension. So it doesn't matter whether that medically that satsang is right, but I know that is a thing of relieving stress. Somewhere either by hobby or some exercise you have to stress. And the food habit should be healthy. ये सब processed food है. जो भी हम पैटीज, KFC, जो भी preserved food है. Regular health checkup है. And there is no age bar for health checkup. You should get it at time. Basic health checkup. Including here. Thank you so much, sir. Thank you, sir. We must have some clarity after discussion. Thank you all of you for being online. Any queries you can post it right now. See it in chat box. Time constraint is there, and we have to end the session. Thank you.